Hello everyone, how is everyone doing? Students, a very warm welcome to all of you on the platform of Unacademy. Let me quickly check who all have joined in. Hi, hello. Hi, Suman. Are you there? Hi, Nitya. Hello. Okay, is that Suman? So students, if you all are able to see me and hear me, please acknowledge in the chat box so that I know that my voice is reaching you all perfectly fine. And we are going to start the chapter Weathering the Storm in Ersama. And this is, it's like a semi-autobiographical, not autobiographical, but it's a narrative story wherein we get to talk about an episode that actually happened. Okay, so we'll take a look through what all happened, who was Prashanth, what happened to him, what incident are we talking about. We'll take a look at that very quickly, but before that, let me see who all are here, if you are able to see me and hear me or not. Okay, so students, we'll start with the chapter. We'll talk about the title that is there. So what is weathering? It basically refers to facing. Okay, weathering refers to facing the storm that took place in the year 1999 in Orissa. We'll talk about that, but before that, let me introduce myself to all the learners here who do not know me. My name is Rumana. I've completed my master's from Delhi University. This is something about me. This is my referral code that you all can use at Unacademy whenever you take the Plus subscription or the Iconic subscription. If you don't know about these subscriptions, I'll update you on that. But before that, students, do me a favor that quickly share the session with all your friends as fast as possible. This is the session for class 9th. So everyone do this bit and then we'll proceed. So everyone do this bit. Okay, I think you all have shared the session. We'll start it. Have you all read the chapter, students? Have you already read the chapter? If not, we'll read it. Okay. Give me just 1 minute, just one moment, everyone, and then we'll proceed. Okay. All right. No, you have not read. Jyoti, have you read? Jyoti has read. Who else has read? Who else has read? Okay, chaliye. So we'll start with this. Okay, learners, if any one of you who is interested in taking the Plus or Iconic subscription, please go ahead and do that. We are having a few wonderful offers at this point in time, so you all must try this out and check for the discount that you can avail. With my code, you can use this code and get 10% discount. ओके और आप में से अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक अनअकैडमी का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप भी करें और फ्री क्लासेस को एक्सेस करें. ठीक है, हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है विच इज फॉर प्लस, यू ऑल कैन हैव अ लुक हियर. इट हैज गॉट मल्टीपल फीचर्स इन इट, like of course you all are learning from the live comfort of your home. Apart from that, you also get access to multiple courses that are out there. You have top educators here at the platform. Regular doubt clearing sessions होती हैं, exhaustive coverage होता है आपके syllabus का. जो भी syllabus है उसे in totality cover किया जाएगा. आपको mentorship मिलेगी, guidance मिलेगा, study material provide किया जाएगा PDF के साथ, और टेस्ट सब कुछ होगा. वीकली टेस्ट होते हैं. हमारा हर 4th सेशन जो होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है ताकि आपका कोई भी डाउट बिल्कुल ना बच जाए. ठीक है, इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं बच्चों. ये 48 मंथ से लेकर के आपको 3 मंथ्स तक का जो भी सुटेबल प्लान आपको लगे आप वो ले सकते हैं. डेफिनेटली व्हेन यू टेक लॉन्गर ड्यूरेशन कोर्सेज यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट देयर, एज वेल एज दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन योर EMI basis plan. So it is monthly, it is 833, but this will come down to 750. How will that happen? Whenever you apply, as soon as you apply this code Rumana10, you get a flat 10% discount. Okay, so 36 months, 24 months, 18 months, 15 months, जो भी आपको suitable लगे आप अपने according ले सकते हैं. ठीक है बच्चों,
चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा जिस पे आप कनेक्टेड रह सकते हैं ताकि आने वाले क्लासेस के बारे में अपडेट मिले। क्लास 9th के बच्चों के लिए भी और क्लास 10th के बच्चों के लिए भी अब रेगुलर क्लासेस होंगी टर्म 2 के लिए। और ट्यूसडे थर्सडे रेगुलरली विल बी फॉर क्लास 9th। आज मंडे को ले रही हूँ क्योंकि अभी एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो इसलिए, बट आपकी स्केड्यूलिंग होगी ट्यूसडे और थर्सडे 9th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। और अभी एक वोकैबुलरी सीरीज भी चलेगी, कल मैं वोकैबुलरी की क्लास लूंगी, उससे भी आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए, सो आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल रेडी? दिस इज फॉर क्लास 9th राइट नाउ, ओके। नाउ बिफोर यू रीड सेक्शन से स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले बच्चों इस स्टोरी को समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट? What is this story about? This story is about devastation. This story is about the fact that everybody, irrespective of age, irrespective of strength, wealth, everything, you are helpless, in the face of nature when something like flood, storm, cyclone, any of these things, when natural calamities take place, you are helpless, okay? But इस टाइम पे जब नेचुरल, तो हम क्या सीख सकते हैं? अल्टीमेटली वी हैव टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट, राइट? हमें हमेशा ऑफ कोर्स उसमें हजार तरह की प्रॉब्लम्स हैं, फैमिलीज अलग हो जाती हैं और लोग कभी बिछड़ जाते हैं, पता नहीं होता कि कौन कहाँ चला गया, क्या हो गया। फ्लड आते हैं, इसी तरह से आपके घर जिनको बनाने में इतना इतना वक्त लगता है वो टूट जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ एक झटके में। बट देन एक ऐसी चीज है जो आपको फिर भी ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करती है, वो है वॉलंटियरिंग, वो है टू थिंक अबाउट अदर्स। अपनी परेशानी से बढ़कर आप दूसरों के बारे में सोचें, यही सिखाती है हमें ये स्टोरी या ये अकाउंट जो हम पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रशांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि साइक्लोन एक्चुअली उड़ीसा में आया था अक्टूबर 1999 में, which kills thousands of people. And let me tell you, this cyclone was not just a cyclone but it was a super cyclone जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ आया था, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। For 2 dreadful nights, Prashanth, a young man, was marooned. Marooned क्या होता है? Who can give me the meaning of this word? Anyone over here? Anyone over here who can update me, who can tell me what is marooned? What is marooned? You're marooned on an island. Okay. So what is marooning? Who can tell me that? That's correct, Pratima. Absolutely. Oh, yes, Rishika. Yes, very good, Pratima. It's more like stranded, marooned. Akela bilkul reh jana. Okay, stranded. Helpless in a very helpless situation on the roof of a house. On the 3rd day he decided to go to his village. Okay, but of course he was not marooned alone, he also had people there. Did he find his family? तो ये जो पूरा अकाउंट है ये प्रशांत के बारे में। अच्छा, प्रशांत कहाँ जाता है? अपने फ्रेंड के घर पे जाता है, राइट? और वहां पे वो अकेला रह जाता है। वहां पे जब वो सोच रहा होता है कि अब क्या करूं, तो उसे थॉट क्या आता है? अपने फैमिली का कंसर्न होता है और वो सोचता है कि चलो मैं फैमिली से के लिए मैं ये हिम्मत करता है, वो करेज दिखाता है, एंड ही kind of endeavors and takes up to visit his village. We'll find out कि क्या होता है प्रशांत के साथ, और क्या वो बिल्कुल हार्ट ब्रोकन हो जाता है, डिविस्टेट हो जाता है, या फिर वो इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी एक हीरो की तरह इमर्ज होता है। तो हमने क्या जाना है एंड में? We'll find that out quickly. ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, where there is a will there is a way. ऑफ कोर्स जहाँ चाह है वहां राह है। तो जब आपने सोच लिया कि मुझे कुछ करना है, जैसे प्रशांत ने सोच लिया कि ठीक है, ऑफ कोर्स डिविस्टेशन है, लोग यहाँ पे काफी, उसने अपने लाइफ के जो it was really in a very impending dangerous situation. He could have thought about himself, his own safety, and he had not taken any kind of endeavor or initiative to move to another place and see how people are surviving in his village. But he did that. Okay, he traveled, he actually took that expedition. It's called an expedition over here. He took that expedition and he took the initiative to travel to his village. And definitely the sight that we see, that we encounter, everything was gruesome, right? It was gruesome, it was pathetic, it was
what to say, it was a really, it is something that we would avoid talking about. Yes, but then what? He was not at all deterred from his mission, right? Okay. Yeah. Yeah. Okay, I'll check that, Pratima. Okay. Yes, that's correct. Now let's get started with this weathering the storm. So weathering basically refers to facing, okay, facing and standing by it, okay, not basically taking the initiative to fight it. Correct? So he takes this initiative, right, everyone? Okay. And Ersama is the place in Orissa. Prashanth went to his friend's house in Ersama on 27th of October 1999, 7 years after his mother's death. So we get to know that his mother had already died. She had passed away earlier. Prashanth had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village. So he has traveled 18 kilometers. This is quite important. It was evening when a dark and menacing storm quickly gathered ground. Okay, basically, it gathered ground. Basically, hona chahiye. It gathered ground means it came up, it built up. Okay, speedy winds caused a fury. What is fury? What is fury? Fury basically refers to anger, right? The basic meaning of fury is anger, but caused of fury is a lot of chaos and destruction. It was accompanied with heavy and incessant. What is incessant? Unstoppable. Okay, unstoppable, continuous, continuous. Rain filled the darkness. Okay, so it was evening time. We all know that it was evening time, and suddenly there was this menacing storm that came up. Okay, it was accompanied यानी कि उसके साथ साथ सिर्फ storm नहीं था, heavy and incessant rain. So सिर्फ wind नहीं blow कर रही थी, there was rainfall as well, और धीरे धीरे बिल्कुल dark होता चला गया. The speed of the wind was 350 kilometer per hour. That's quite a lot, which uprooted even the ancient trees. अच्छा, ये reference क्यों दिया है student? This could be a very important question. Yeah, so this uprooted even the ancient trees. Why is this reference given over here? Because ancient trees are those trees whose roots are very strong. ठीक है, जिनके रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, डीप होते हैं. तो दिस शोज द इंटेंसिटी of the wind, that these trees, which are considered to be the strongest of all the ancient trees, even they got uprooted. तो छोटे मोटे plants का क्या हुआ होगा? ठीक है, so this reference is quite important, that they were quite strong trees, even they got uprooted. The scene of destruction was terrifying. Everybody was terrifying. Can anybody tell me what all happened? What all happened during it? Of course, सारे घर घर जो थे उनके ऊपर पेड़ गिरने लगे. जो स्ट्रॉन्ग हाउसेस थे, जो पक्का हाउसेस थे, वो स्टूड कर रहे थे. जो छोटे मोटे मड के हाउसेस थे, या विच वर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कच्चा हाउसेस जिसे हम कहते हैं, वो उड़ जा रहे थे, खत्म हो जा रहे थे. जिनकी जो रूफ्स थी वो चली जा रही थी. लेकिन जो घर बच भी गए थे, जैसे जिस घर में प्रशांत था, वो फिर भी वहां पे इट स्टूड देयर. बट देन ट्रीज जो थी अलग अलग जगहों से, वो गिर रही थी पेड़ों, घरों के छतों के ऊपर. ओके, द सर्च कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स, और 36 आवर्स तक यही नजारा रहा. द साइट वॉज एब्सोल्युटली नर्व रेकिंग मतलब बहुत ही दुख देने वाला, बिल्कुल इंसान को नर्व बिल्कुल, इट वॉज नॉट जस्ट इट वॉज वेरी वेरी more than surprise, it was more of a shock. Okay, it was nerve wracking. You were all very very trembling and filled with fear. Okay, so ये emotion क्या हो सकता है? Fearful हो सकता है. ठीक है, बिल्कुल डरावना. Brown sheet of water covered everywhere. ये brown क्यों हो चुका था? जो soil थी रोड पे और उस एरिया में, वो पूरी बाहर आ चुकी थी, and that was, it was all appearing. Water was covered with brown mud. Okay, so it was muddy, it was all a brown sheet of water. Dead animals and human bodies floated everywhere. Huge trees had fallen. You can
Look at the devastation, the site of devastation, you look at the description of it. So this clearly suggests that this scene was not at all pleasing. The scene was nerve-wracking. It would have caused a lot of pain and grief to people looking at it, just looking at the sight of it, कि क्या होने वाला है, कहीं ये storm फिर दोबारा ना आ जाए. So it was a face of death, right? Everyone, bloated animal carcasses. So it was the dead bodies. Okay, very gruesome, isn't it? Human corpses floated in every direction. So these people were at the top of a house and they were looking around, and what they saw was this: bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction all around. Even huge trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house, and this was called blessing in disguise. Can anyone tell me this phrase? Yeah, now students, let me tell you, if you don't पे अटेंशन टू सच फ्रेजेस, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है ना. तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज का क्या मतलब होता है? या टेल मी, व्हाट इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज? A situation which is supposedly not supposed to be providing any good or any benefit to you, but it proves to be a blessing. So for example, you bring 2 bottles of water instead of one. Okay, so maybe you're going to school, just random example, that you're going to school, and you carry a bottle with you, and maybe your mama also gives you water, and when you go to school, you see, oh my god, my mom has also given me a bottle and I also have got a water. So it was actually not a blessing. You had to carry 2 bottles, but suddenly your friend comes and say, you know what, I left my bottle at home. Just 1 second, students. So your friend says that, you know what, have you got a water bottle? I left my bottle at home. So this proves to be a blessing in disguise, right? That you left it at home, and the friend left it at home and you got it for him. So this proves to be a blessing in disguise. So ऐसी चीज जो actually में blessing होती नहीं है, लेकिन उस moment पे blessing in disguise prove हो जाती है. ठीक है? Clear है बच्चों? Any doubt till here? Yeah, that's correct, Pratima. That's absolutely correct. Okay. So कैसे हुआ ये blessing in disguise? Can anybody tell me? So coconut trees. So these coconuts that had fallen on the roof, on the terrace, they could have caused this, destruction. Okay, they could have harmed them. They could have caused injury to them. But उन पेड़ के साथ क्या हुआ? कोकोनट भी आ गया, और वो कोकोनट पे ये लोग सर्वाइव कर गए. Okay, otherwise they wouldn't have survived. Got it? हेलो, हाय बाजीगर, हेलो. स्टूडेंट्स, इस सेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी सेशन का मेंटी क्विज होने वाला है थर्सडे को. ठीक है, तो इस पे मैं क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ आपसे बहुत सारे. यस, एब्सोल्युटली ज्योति, दैट्स राइट. इट्स ओके सुहानी, ज्वाइन इन क्विकली. प्रशांत एक्सपेडिशन टू हिज विलेज. तो ये फर्स्ट पार्ट क्या था? क्या समझा आपने? ये पूरी वो सीन थी जहां पे हमने देखा कि कैसे डिवेस्टेशन कॉज हुआ, कैसे स्टॉर्म स्टार्ट हुआ, लोगों को कैसा फील हो रहा था, अपने अराउंड लोग क्या देख रहे थे, क्या विटनेस कर रहे थे. हमने ये फर्स्ट पार्ट में देखा. अब हम क्या देखने वाले हैं कि प्रशांत, जो कि वहां पे ये सब कुछ विटनेस कर रहा था, उससे फिक्र हो रही थी किसकी? अपने घर वालों की. was thinking about his village, about his people, about his family. of course उनकी ममा नहीं थी, लेकिन बाकी लोग थे, उनके रिलेटिव्स थे. तो उन्होंने क्या सोचा? प्रशांत, जस्ट अ सेकेंड, प्रशांत ऐसे नहीं होगा. आई थिंक ये अनसेव्ड फाइल आ गई है बच्चों. ओके, प्रशांत एक्सपेडिशन इज अ जर्नी. ओके, जर्नी जिसमें कि थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व हो. ओके, रिस्की जर्नी. एक्सपेडिशन टू हिज विलेज. क्योंकि ये रिस्की क्यों था? वाई इज दिस कॉल्ड एन एक्सपेडिशन? क्यों रिस्की? इसलिए था क्योंकि ये बहुत ही इंजॉयबल जर्नी तो नहीं होने वाली थी, डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी. बट देन ही डिसाइडेड टू टेक दिस अप, कि चलते हैं.
As soon as the rain ceased, जैसे ही थोड़ी सी बारिश हल्की हुई, कम हुई, जो incessant rain थी, which was raining cats and dogs, अब वो क्या हुआ, drizzle में convert हो गया, maybe जैसे ही ceased यानी कि थोड़ी सी थमी, रुकी, Prashanth was determined to seek out for his family. They were nearly frozen in cold wind. Prashant thought of his family and decided to start. He got hold of a strong stick. और सबसे पहले उसने क्या ले लिया, strong stick ले लिया. क्या करता वो इस stick से? What did he decide to do with this stick? What did he decide to do with this stick? Find a way for himself. He then started on his 18-kilometer journey to his village. और वो कैसे जाने वाला है? How is he going to travel? By a car? By a cart? By a plane? No, he's going to walk through. The water was waist deep at several points. और कई जगहों पे ये water बहुत ही deep था. Was it shallow? Was the water shallow? Tell me. अगर मैं आपसे पूछूं, was the water shallow? आप क्या बोलोगे? Yes or no? Swimming. Yes, Pratima. Was the water shallow or not? It was waist deep. It was not shallow at all. Okay, at one point he lost the road and had to swim. After some distance, no, it was not shallow. Shallow का मतलब होता है not deep. Something which is not deep. Okay, so mostly it was deep and he had to swim, but there was a few points where it was shallow, it was not deep. After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle. अपने uncle के दो दोस्तों को इसने देखा and he had a sigh of relief. What is sigh of relief? चलो, finally I found someone. Okay. Who were also returning to their village. Prashanth could barely see a house standing in any of the villages he passed. अब धीरे धीरे इसका डर और बढ़ने लगा. कैसे बढ़ने लगा? क्योंकि अब जितने भी विलेजेस वो क्रॉस कर रहा है, वो सारे के सारे बिल्कुल उसमें कोई हाउस ही नहीं बचे. So the sight that he is witnessing is only and only aggravating his situation. It's only causing him more pain and grief. The sight made him utterly emotional and he wept loud. क्यों रोने लगा वो? Why did he start crying? Because he could relate कि जैसे ये पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो चुका है, खत्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है. Similarly, मेरा भी गांव बिल्कुल खत्म हो चुका होगा. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. What is catastrophe? What is catastrophe? Who can tell me this? Yes, it was deep, definitely. What is catastrophe? A very कैसा situation? What word can you use for catastrophe? Can you give me a synonym for it? बहुत ही मुश्किल का situation, right? A calamity, right? A calamity. Disaster, right? Calamity या disastrous situation कह सकते हो. Disaster. It was catastrophe. It was a disaster. Okay. He finally, can you find more synonyms for this? Oh yes, very good Pratima. Very, very good. It was a disaster. Correct. He finally reached Kalikuda and this is his village. Okay, this was his village. His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. और अब जहाँ घर हुआ करता था, वहाँ सिर्फ और सिर्फ छत बच गई थी, roof बच गया था. Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family and he found his maternal grandmother. अब क्या देखा उसने? सिर्फ और सिर्फ अपनी grandmother को पाया. Prashant decided to assess the damage and the danger awaiting the survivors. Okay? अब उसे अपनी ग्रैंडमदर को देखा और बिल्कुल उनके गले लगते ही वो रोने लगा. फाइनली कोई तो दिखा उसे अपने फैमिली का और कौन दिखा? अपनी मैटरनल ग्रैंडमदर, जो कि नानी हुई, वो दिखी. Prashant decided to assess the damage and the danger awaiting the survivors. He sensed a deathly grief settling upon 2,500 strong crowd in the shelter. 86 lives were lost in the village. How many? 86 lives.
Prashanth only 19. How old was Prashanth? Only 19 years old. Organized a group of youths of his village. It pressurized the merchant to give them some rice. They made a fire and cooked the rice. So finally, जो rice जो वो भी खराब हो रही थी, okay, because of rain and water and moisture. They made a fire and cooked the rice. और पहली बार इन लोगों ने they ate to fill their bellies, है ना, अपने इतना सेटिस्फाइंग खाना उन्होंने इतने देर तो कुछ भी नहीं खाया था, शायद कोकोनट पे ही जी रहे थे ये लोग. His next step was to clean the place of filth and floating bodies. वहाँ पे बहुत खराब हो रहा था, लोग बहुत सिचुएशन gruesome थी, बहुत ही it was very filthy. He decided to take the initiative and clean it. प्रशांत इनिशिएटिव एंड सोशल वर्क, ये इसका लास्ट पार्ट है. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रही चीजें. आई नो दिस इज नॉट अ वेरी व्हाट टू से, अ वेरी सूदिंग एंड नाइस स्टोरी, but of course there's a lot of learning in this particular story that we get to know, and it is also something very real, right? So this is something that is, of course, हम इस चीज को कभी इनकाउंटर नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि कभी ऐसा हो हमारे साथ या हमें कभी ऐसा विटनेस करना पड़े, बट दिस इज द रियलिटी. ऐसा कभी भी हो सकता है और नेचुरल कैलामिटी डिवास्टेशन के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है. ठीक है, और ये बहुत ही लर्निंग से भरी हुई स्टोरी है. ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. So कुछ parcels. ठीक है, तो 5th day, 5वें दिन, ओके, 4 दिनों तक कोई हेल्प नहीं थी, कोई असिस्टेंस नहीं था, और मिलिट्री हेलीकॉप्टर आता है और कुछ पार्सल्स गिराते हैं, वो ऊपर से थ्रो करते हैं. बट देन इट डिड नॉट रिटर्न, उसके बाद वो नहीं आया. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. Then they deputed the children to lie in the stand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs. What was this? This was a symbol that we are hungry. Okay, this was symbolic. This was another initiative that he took. क्या किया, बच्चों को वहां पे ऐसे लाइन से they were lying there, और उनके स्टोमक पे क्या किया, ये utensils रख दिया to show that we need food, okay, to communicate to the passing helicopters that they were hungry. Okay everyone, correct. Triumphant मतलब बहुत ही जीत से, okay, victorious. ठीक है. As the weeks passed, Prashanth was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. अब यहाँ तक इसने तो जो इनिशिएटिव ले सकता था, फैमिलीज को ला सकता था, वो लाया, उन्होंने किया. लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप एक दुख के फेज में हो तो उस टाइम तो यू सर्वाइव, राइट, यू समहाउ मैनेज टू कम अप, कोप विथ इट. बट धीरे धीरे ग्रीफ बढ़ने लगा. क्यों? क्योंकि अब उन्हें अपनी लोनलीनेस का एहसास होने लगा. दे स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट दे वर लोनली, दे हैड लॉस्ट देयर फैमिलीज. Okay, और धीरे धीरे they started recognizing that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. और ज्यादा वो दुख में भरते जा रहे हैं, इन्वॉल्व होते जा रहे हैं. प्रशांत becomes a savior. Who is a savior? Who is a savior? Students tell me. And a social worker. Okay, so he becomes a savior and a social worker. So finally we get to know that Prashanth, he was the one who took this initiative, and he involved himself in the care and help of others. He did not think of himself. उसने अपने बारे में अभी तक हमने कहीं भी नहीं देखा कि उसने कोई इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच लिया हो, या उसने अपने बारे में सोचा हो, या कि मेरी फैमिली का क्या होगा. So he is only 19 years of age, right? You all can think of him, like what kind of a personality he has. He became a social worker. और फिर उसने एक और initiative लिया. What was this initiative? He brought the orphaned children and made a shelter for them. So अभी क्या है कि कुछ ऐसी families हैं जहाँ पे widows रह गई हैं, उनकी पूरी family जो है वो खत्म हो चुकी है, वो जा चुकी है, वो नहीं है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, सिर्फ बच्चे रह गए हैं. तो what he decided to do, or what he basically suggested to do, was to put them together. उसने कहा कि ठीक है, ये जो orphan widows हैं, इन्हें हम responsibility दे देते हैं इन बच्चों का, ठीक है, ताकि वो उसका केयर कर सके. And then these
children will be taken care by the women. Okay, so they'll also get a mother-like figure and mothers will get children. He brought them and made a shelter for them. He asked the women to look after them. He made them join the Food for Work program. It was started by a non-government organization which is called NGO. He engaged other volunteers to help keep widows to start their lives. He also believed that orphans should be resettled in their own community with new foster families. What is foster family? Again, a very important word. So it's more like adopted family. All right, so foster families are families which are adopted, not by birth. Okay, so where you have adopted families. So नई फैमिलीज इन्हें फिर से क्या किया गया, रीइंस्टेट किया गया, उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ा गया ताकि जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, जिन माओ ने, उन्हें ये बच्चे मिल जाएं, जो बच्चे जिनके पास फैमिली नहीं है वो फैमिली मिल जाए. तो कुछ ना कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स लाकर प्रशांत कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी को फिर से नॉर्मल किया जाए. So he is trying to bring a ray of hope in the lives of people who have lost everything. They have lost their lives, the lives of they have lost their families, they have lost their houses. Okay, 6 months passed after this devastating incident, after this havoc that was created over there. This time Prashant's wounded spirit has healed, simply because he had no time to bother about his own pain. Now, this is a very deep, meaningful line that you all can read and infer, that his wounded spirit has healed. उसका जो दर्द था, उसकी जो तकलीफ थी, that has healed. How has it healed? उसने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये heal ऐसे हो पाई क्योंकि he is not thinking about himself. All he is doing is to think about others. और इसीलिए अब उसका पेन जो है वो कम हो गया है. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. और अपने सबसे darkest hour of grief मतलब most heart wrenching, most difficult. Okay, most difficult, मोस्ट पेनफुल टाइम में वो किसे याद करती हैं? प्रशांत को याद करती हैं कि इसकी वजह से आज शायद हमें फिर से फैमिली मिल पाई है और हम फिर से एक थोड़ी नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश कर पा रहे हैं. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, अगर मुझे आपसे कहूं कि मुझे आप एक कोटेशन दो, ओके, गिव मी वन कोटेशन. कैन यू ऑल डू दिस एज अ होमवर्क? या कैन यू गिव मी वन कोटेशन? अच्छा, लास्ट क्लास से मैंने एक होमवर्क दिया था आप लोगों को, क्या आपने किया है? ओनली ऑफ हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स सबमिटेड द होमवर्क. मेंटी होगी थर्सडे को, ठीक है, इसी चैप्टर की. ग्रीफ मतलब इंटेंस पेन, सॉरो, ओके, इंटेंसिफाइड सॉरो, बहुत तकलीफ. ओके, तो आपका ये होमवर्क है स्टूडेंट्स, दैट यू ऑल हैव टू कम अप विथ वन कोटेशन. जैसे मैंने एक कोटेशन दिया था, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. कैन यू फाइंड अ सिमिलर कोटेशन फॉर दिस चैप्टर एवरीवन? या yes, now we'll come to take a look at the important words that have been used in this particular chapter. These are very important. Weathering refers to facing. Menacing refers to dangerous and harmful. So menacing is किससे रेफर किया गया है? So storm को. Glimpse is the sight of it. Glimpse is just a झलक, what we call, it's more like having a slight look. Okay. Super cyclone. Okay, so this cyclone is referred to not just as a cyclone, but as a super cyclone. Speedy cyclone. That is a calamity. Not a normal cyclone. Of course, cyclone अपने आप में ही बहुत devastating होता है, लेकिन this was also considered a super cyclone. Incessant, unceasing, continual, unstoppable. That's something that was not stopping. Incessant, बिना रुके हुए. Shallow, light, not deep. Swirled, in a round motion. Moved or flowed along with a whirling motion. हम पढ़ते हैं ना, हमने देखा ना whirlpool. Yes, what is whirl? Whirling motion, round. Okay.
Carcasses, dead bodies of animals are referred to as carcasses. Catastrophe is a disaster. Bereaved, lost a close connection, a relation or friend through her death. So bereaved is to lose, to get away from close relatives or friends. Remnants, remaining, small remaining quantities. Remnants of something is the whatever is remaining. Okay. Motley, disparate or a variety of something. Varied in appearance or character. ये किसे रेफर किया गया है? जो लोग वहां पे थे बहुत सारे उन्हें रेफर किया गया है. Tumult, uproar of a disorderly crowd. So there was a tumult, there was chaos, there was havoc. ये सारे words आप relate कर सकते हो. और बच्चों, let me tell you, you all are facing a lot of problem in reading comprehension passages. और आगे भी अगर आपको अपनी रीडिंग, अपनी वोकैबुलरी, अपने क्वेश्चन आंसर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चों के लिए, तो आपको अपनी वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा. ये सारे वर्ड्स आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाने चाहिए, आपको यूज करने आना चाहिए. हाउ टू यूज these words when you talk, when you speak, when you write. Okay, so remember these words and try to apply them or try to use them in your everyday conversation. ठीक है, ताकि ओवरऑल आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो लैंग्वेज है वो इंप्रूव हो. ठीक है, ओके. नाउ question number 1, I want quick answers from my students. If you have understood the chapter, quick answers. These are NCERT questions, everyone. Okay. Tell me, what havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Orissa? What has it done to these people? Who's going to answer that question? Quickly. Let me see who answers first. What havoc? Havoc refers to devastation, a lot of, destruction. Okay. Tumult, confusion. Havoc is everything that causes a lot of destruction and devastation in your life. What has it done? Give me 2 things that happened. Give me 2 things that happened. Students, 2 points. Okay, Yashika. Tell me, what have you learned? First thing that we saw, that all the houses were broken, families were uprooted, everybody, most of the people lost, their family members. Isn't it? Absolutely. So what? Life of the people of Orissa. Yes. Houses destroyed. Yes, there was no food to eat for people. So they went hungry. There was a lot of destruction. There were carcasses. People were very scared. Very good, Jyoti. Very good, Jyoti. Very well written. Others. Mamta, Yashika, Rajesh. Yes, it was full of, it was very intense. It was full of intensity, but it was more like, it was very intense. It was not intensive. It was intense, very intense and very, very chaotic. It caused havoc. Havoc is a lot of destruction. All right. And people were definitely uprooted from their families. They were uprooted from their houses. Many people lost their houses. अच्छा, villages में हमने देखा कि पूरा village ही साफ हो गया. कैसे? क्योंकि village में इतने strong houses नहीं होते हैं. जो जहाँ प्रशांत था वो घर फिर भी मजबूत था, उसमें स्टोरीज थी अलग, there were floors in it, तो वो सबसे ऊपर जा करके चला गया, तो शायद उसकी जिंदगी बच भी गई. अगर वो ग्राउंड फ्लोर पे होता तो शायद नहीं बच पाता, शायद वो भी बह जाता. तो ये सारी चीजें हुई, याद रखेंगे ये सारी चीजें. तो विलेजेस में हमने क्या देखा कि गांव के गांव उड़ गए, सिर्फ रूफ बचे, घर ही नहीं बचे, सिर्फ रूफ्स बचे. Okay, so people were uprooted from their houses. They had to live in they had to go to the NGOs. They had to go to these places where they gathered together. Yes, everyone, ये सारी चीजें important है. Correct, Pratima. Yeah, there was a lot of sorrow in them, in their hearts, of losing their families, of their children. Mothers lost children, mothers lost wives, lost husbands. Yes.
How has Prashant, a teenager, been able to help the people of his village? अब मुझे 2 इनिशिएटिव बताइए जो प्रशांत लेकर आए. क्या 2 चीजें करी इन्होंने? What did he do? 2 things that he did. 1, he made people eat rice जो ऑलरेडी रॉट हो रही थी. That was the first thing he did. ठीक है. उसके बाद second thing, he also kind of brought together families. Okay. So उसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी? विडोज को बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. बच्चों को जो विडोज थी उनके साथ फॉस्टर फैमिलीज में कोशिश किया उन्हें साथ में रीइंस्टेट करने का, रिस्टेबलाइज करने का. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैज द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर? What role do the women of Kalikuda play during these days? Women का क्या रोल रहा? अभी जो हमने डिस्कस किया उसी को आप थोड़ा एक्सटेंड करके बता सकते हैं. ओके. और बच्चों को क्या किया? बच्चों को लाइन अप कर दिया, उन्हें लाई डाउन कर दिया और दिखा सिंबलाइज करने के लिए विथ यूटेंसिल्स एट देयर स्टमक, ऑन देयर स्टमक, to show that they were hungry, they were starving, so that some food parcels can be dropped. Okay. Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows? What alternatives do they consider? Tell me, what alternatives do they consider? Yeah, of course they wanted to reinstate them together, bring them together, जो हमने बात करी. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. या वेरी गुड हरीश, वेरी गुड. New foster families, correct. Very good Pratima, very good Pratima. All right, so students, I hope you all are able to answer all of these 4 questions. I would request you one thing. Okay, I would really request you to, if you want to improve your writing skills, please try to answer these questions in 2-3 sentences. Okay, think about points, and if you want, you all can discuss those points with me, or you can submit them as homework if you want. If it's entirely your call. पर एक homework जो मैंने आपको दिया है वो क्या है? एक कोटेशन चाहिए. इस पूरे एपिसोड पे एक कोटेशन मैंने आपको बताया है. Where there is a will, there is a way. आप खुद से एक कोटेशन ढूंढेंगे for this particular chapter. Is that okay? Why am I asking you to do this? Because you will have descriptive answer writing this time, और उसको enhance करने के लिए, अपनी writing skill improve करने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ी extra reading करें और एक्स्ट्रा चीजें लर्न करें ताकि आप अपने आंसर्स को और खूबसूरत और अच्छा बना सकें. ठीक है एवरीवन? चलो ठीक है बच्चों, we'll have a mentee for this session on Thursday. So be ready, be prepared. आप लोगों के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए एक प्रोडिजी बैच स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का, ऑल सब्जेक्ट्स का, जिसमें इंग्लिश मैं लूंगी. यू विल हैव एसएसटी, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, हिंदी, सब कुछ. सो इनरोल कर लेंगे 10th के बच्चे. अगर नहीं किया है तो बक्स बाउंटी आपके लिए एक फीचर है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू लर्नर्स कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट वन है टू रिपोर्ट, यू कैन ऑल्सो क्लेम अ प्राइज फॉर इट. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही अमेजिंग सब्सक्रिप्शन प्लान है जो कि एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग आपको देता है. ठीक है, पर्सनलाइज्ड यानी कि 1-on-1 मेंटरशिप होती है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलता है, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं और उन्हें भी बताते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. तो आप चाहें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए. स्टडी प्लानर भी है आपके लिए, सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के. ठीक है बच्चों? तो ऑफ कोर्स प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा भी बहुत ही स्पेशल आपके पास यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल हैं. इसकी प्राइसिंग आप देख सकते हैं बच्चों, जो भी आपको सूटेबल लगे. 48 मंथ्स, 36 मंथ्स, 24 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 months or 3 months, you can take whichever suits you. Of course, longer duration of courses give you maximum discount. So 1729 will come down to 1556, 1833 will come down to 1650, 2000 will come down to 1800. How will that happen? You have to use the code Rumana10, which is my code. Okay, तो ये कोड याद रखेंगे बच्चों. थैंक यू यशिका, आई होप यू ऑल एंजॉयड. और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप कनेक्टेड रहें हमारे साथ, और आने वाले सेशंस के बारे में अपडेट करती रहूंगी. कल होगी वोकैबुलरी सेशन, ओके, फॉर ऑल ऑफ यू.
और हो सकता है ये वर्ड्स भी आपको वहां दिख जाएं, ठीक है। तो पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। आप लोगों के लिए कुछ बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं क्लास 10th के लिए। ये बैचेस हैं विक्ट्री बैच एंड दिस इज प्रोडिजी बैच फॉर क्लास 10th। ओके और आप में से जो भी चाहते हैं अनअकैडमी कॉम्बैट देना और स्कॉलरशिप जीतना, ज़रूर करें, ज़रूर ये एग्ज़ाम दें। दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर क्लास 9th, जो 11 AM पे होता है। कब होता है ये? दिस इज़ फॉर और ऑल ऑफ यू ऑन एवरी संडे। हर संडे होता है। एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है। तो 6 to 12th की क्लास में है जो कि आप हैं, आप बिल्कुल ये ऑफर अवेल करें, जिसमें कि 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। दिस इज अमेजिंग। और फ्लैट 10% डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन ये फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स के लिए है, ठीक है। आप देख सकते हैं आइकॉनिक अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये ऑफर एप्लीकेबल है, जिसमें आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 4 मंथ्स का K12 सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। यू कैन हैव अ लुक एट दिस एंड अवेल दिस एज फास्ट एज पॉसिबल। आइकॉनिक मैंने बता दिया। फ्री क्लासेस होती हैं आप लोगों के लिए, फ्री क्लासेस भी होंगी। और फ्री क्लासेस में क्या होता है? रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, चैट इमोजीज के थ्रू आप चैट भी कर सकते हो, और क्वेश्चन टैब होता है जिसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव पोल्स होते हैं, लीडर बोर्ड होता है जिसमें अपने फ्रेंड्स के साथ compete कर सकते हो। आई होप यू ऑल enjoyed the class students. I hope you all have subscribed to Unacademy and I hope that you all have downloaded the Unacademy app, ठीक है, जिसके थ्रू आप फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। ओके बच्चों, आई विल सी यू ऑल ऑन टुमारो ऑल्सो, बट टुमारो विल बी अ वोकैबुलरी क्लास। इस क्लास की कंटिन्यूएशन हम थर्सडे को करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय। प्रतिमा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज देंगे कोड्स।